Yes, students, chapter 3 Business Environment. We are done with the second one, Principles of Management, and now, third one, Business Environment. You know the meaning of business, right? Business क्या होता है हमें पता है. And you also know the meaning of environment. हम छोटपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि environment क्या होता है. So, what do you mean by business environment? Let's see one by one. Business, that we know, the sale and purchase of goods and services, है ना. और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी चलती है बिजनेस का मीनिंग हमें अच्छे से पता है, दैट इज बिजनेस. एंड नाउ एनवायरमेंट, दैट सराउंड्स अस, दैट सराउंड समथिंग. लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स. और जो भी हमारे आस पास हो रहा है या जो भी एग्जिस्ट करता है, जिनसे हमारी लाइफ जुड़ी हुई है, अफेक्ट होती है, इफेक्ट पड़ते हैं, जो भी फैक्टर्स जो भी हैं, दैट सराउंड्स अस, दैट इज एनवायरमेंट. ओके, वी आर social animal, so we live in a society. So this society or whatever surrounds us is an environment. Okay, now what is business environment? Like this is business enterprise, this is business enterprise, right? This is a business enterprise. Now the same thing, that forces, the factors, that individuals, institutions, that affects or put an effect on business is business environment. जो भी इसमें कुछ इफेक्ट डालते हैं, ओके. सो इसकी परफॉर्मेंस उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है, दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट. these factors are business environment, right? So whatever surrounds us is environment, and whatever surrounds a business that put an effect on the business is business environment. Very simple to understand. Now let's see the meaning of business environment. Business environment refers to forces, factors, individuals, and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. See the lines: forces, factors, individuals, institutions, everything that is outside the business and which is not in the control of business. हम environment को रोक सकते हैं क्या? Like COVID enters our life, which was not a good sign for anyone, okay, and it destructed human lives so devastatingly. So that is also a part of environment which was not in our control and which is beyond our control. So in the same way, the factors that surrounds a business which is not in the control or outside the control of business enterprise के बाहर का कंट्रोल जो है, ठीक है, उसके अंडर नहीं आता, एंड दीज में इफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, एंड जिसका इफेक्ट पड़ सकता है बिजनेस एंटरप्राइज के परफॉर्मेंस पे, सो वो होता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट. ओके, सो हाउ what can be the examples of business environment? Like we know that natural calamity हो जाती है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, राइट? लेकिन हमेशा डाउन नहीं होता, कभी कुछ अच्छा बूम आ जाए या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे पास आ जाए, लीगल चेंजेस ऐसा कुछ हो जाए जो हमारे फेवर में हो, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी कैन से, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग in which business exists. It is the surrounding in which the business exists. Okay, so it can be like economic हो सकता है,
सोशल फैक्टर भी हो सकता है। पॉलिटिकल तो आप जानते ही हो, पॉलिटिकल का आजकल बहुत रोल है हर जगह ही। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। लाइक यू पीपल यूज़ योर मोबाइल फ़ोन्स। पहले कौन से फ़ोन्स चलते थे, फिर कौन से फ़ोन्स चले, तो उनका प्रोडक्शंस एवरीथिंग गेट इफेक्टेड। ओके, लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके, एंड अदर फोर्सेस लाइक अपने पर्सनल भी हो सकते हैं, जिससे बिजनेस का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाए। सो स्टूडेंट्स, what happens, although these environmental forces exits outside, these are not in the business enterprise, these are the outsiders, these are the outsiders, but the enterprise, but they influence the enterprise। okay, though these are outside, but कुछ भी changes होता है यहाँ पर, ये effect होता है। like you people know that increase in taxes by गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। हमें अच्छे से पता है टैक्स फिर हमसे ही वसूल करेगी, तो क्या हो जाएगा, इट मेक्स द थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय। महंगी हो गई हमारे लिए खरीदने के लिए, इजंट इट? हो गया, environmental effect पड़ गया। okay, so students, what happens, like changes in fashion, changes in taste, changes in demand, it brings to change in the business enterprise also। okay, so what a manager, what a business required to do um, so it become essential to know about the outsiders, to know about what is happening outside that can put effect on my business enterprise. So what a business required to do, it requires to do environment scanning। the word environment, आप लोग स्कैनिंग करते हो ना, तो environment की स्कैनिंग होनी चाहिए। now what is this environment scanning? let's read। it is essential to know what is environment scanning। yes, so students, it refers to complete awareness and understanding of business environment। with environment scanning, business enterprises can anticipate the effect of environment forces and factors on their enterprise। complete awareness, a business should keep a complete awareness about the outsiders and understanding of business environment, that what is going to be happen, like nothing can be predicted, but जो analysts होते हैं, business analysts, they know how to study the market, how to study the environment, that what can be happen and what steps should be taken and what steps should be used, what technology should be used in my business enterprise, so that I can may not suffer the constraints, कोई suffer a big loss or suffer a great मीन्स अफेक्ट ज़्यादा ना हो मेरे परफॉर्मेंस पे, बिजनेस पे। तो एक इन्वायरमेंट की पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है। सो इट कैन, वाई वी आर स्कैनिंग, बिकॉज हम बचाना चाहते हैं अपने बिजनेस को। कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट फोर्सेस फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइज। एंटिसिपेट, कम करें उसका जो इफेक्ट है हमारे बिजनेस पे, हम कम कर पाएँ। समय के साथ चलते हैं तो सब कुछ साथ साथ अच्छा होता है, ठीक है। और एक बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्लान, एंड you should keep an idea of consequences। okay, so this is environment scanning, which is very essential because of these factors, these environment। okay,
Like students, there is an example. बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टनिटीज भी ले सकते हो आप, बिकॉज समथिंग सम few things that's like this is business. Okay, like my business is going, this means we are going towards success, but in these years we faced huge loss also. So some things are constraints or bring constraints, and few things brings opportunities, isn't it? कुछ बातें बिजनेस के लिए constraints लाती है और opportunities भी लाती है. बिजनेस एनवायरनमेंट ही बनाता है ये सब. सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है कुछ कॉन्स्टेंट्स लाएगा, अपॉर्चुनिटीज लाएगा. कॉन्स्टेंट मीन्स द रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ होती हैं. पाबंदियाँ होने से आपके हाथ बन जाते हैं, आप अगेंस्ट नहीं जा सकते. यू कैन नॉट डू बाय योर ओन एवरीथिंग. यू हैव टू फॉलो व्हाट इज गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है, टेक्नोलॉजी यू हैव टू फॉलो. Like for example, the regulation of Act MRTP student 1969 का ये एक्ट है. दिस इज एक्ट. ओके, ये वेल्थ रेस्ट्रिक्शंस का है एंड इट पुट कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन द बिजनेसमैन. इट मीन्स मोनोपोलिस्टिक restrictions on trade practices. Okay, सो ये तो रेस्ट्रिक्शंस पुट करता है कि आपको कहाँ कहाँ रोक लगानी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आप इसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करते. रेस्ट्रिक्शंस जितनी भी ट्रेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जो भी हैं ये एक्ट बनाता है. और ऑन द अदर हैंड वी सी लिबरलाइजेशन इन पॉलिसीज या लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, आज़ादी जो है फ्री है. दैट इम्पोर्ट रिलैक्सेशन. लिबरलाइज, आपको लिबरल कर दिया. फ्री करते हो तो आप रिलैक्स हो जाते हो. सो इट ब्रिंग्स रिलैक्सेशन पॉलिसीज that brings opportunities for the businessman. Okay, so this is the example of business environment, that how it can affect on the performance of business. So what we study, that business environment means, student, business environment means that surrounds the business और जिसमें exist करता है हमारा business, because we are also part of this surrounding, है ना, हम भी हैं इसमें. So simple words में क्या कह सकते हैं, that business environment is the surrounding in which the business exists, and these can be the factors: economic, social, political, technological, legal, and other factors. We will study one by one, and I gave you the examples also, that how a product becomes expensive to buy if the government imposes taxes और हाई कर देती है टैक्सेस को. सो इन सब का पता लगाने के लिए हम करते हैं environment scanning, means the complete awareness of the outsiders. So that's all. These were the points for today's lecture, and we studied about the introduction of business environment, the meaning of business environment.